सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये हमारा सेकंड वीडियो है इस पर्टिकुलर टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी से। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। सो द क्वेश्चन नंबर 26, मैच द टेबल। सो हियर द ऑप्शंस: 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom and 5 kingdom. Right hand side, who proposed? So options are Hans Tekel, R.H. Whittaker, Carlos Linnaeus, and Herbert F. Copeland. So here the right answer is 2 kingdom system approached by Carlos Linnaeus, 3 kingdom system approached by Hans Tekel, 4 kingdom it is approached by Herbert F. Copeland, and 5 kingdom system it is proposed by R.H. Whittaker. So next question, question number 27. Who introduced domain concept? Options are Robert Koch, Louis Pasteur, Carlos, Joseph Lisser. So here the right answer is Carlos. Next question, 28. So microbes use light as source of energy, inorganic compounds as source of electrons, and carbon dioxide as the source of carbon. So which one is the right? यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस के हिसाब से that organism, that microorganism is called as, which option is right one? So options are number A, chemolithotrophs, photolithotrophs, photoorganotrophs और chemoorganotrophs. So यहाँ पे राइट आंसर इज फोटोलिथोट्रॉप्स। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप टेबल से देख सकते हो। सो यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सोर्स ऑफ कार्बन, इस बेसिस में हम लोग माइक्रोब्स को डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग्स या डिफरेंट नेम्स इज असाइन टू देम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक फोटोलिथोट्रॉप्स, केमोलिथोट्रॉप्स, फोटोऑर्गेनोट्रॉप्स एंड केमोऑर्गेनोट्रॉप्स. It is all based about these three different things. यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स वर्ड भी यूज होगा व्हेन सोर्स ऑफ कार्बन इज इनऑर्गेनिक, देन इट विल बी ऑटोमेटिकली ऑटोट्रॉप्स, और जब सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन यू कैन से इज कार्बोनिक कंपाउंड्स, देन इट विल बी नोन एज हेटेरोट्रॉप्स. सो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. McConaughey agar is dash media. The options are transport media, reducing media, selective and differential media, general media. So here the right answer is this McConaughey is actually a selective and differential media. So यहाँ पे example एक दिया गया like eosin, methylene blue agar media. It is example of this kind of selective and differential media. That is what McConaughey agar is also under this particular type. So next, which of the following is a radio-resistant bacteria? The options are Desertibacter, Rhoseus, Escherichia coli, Bacillus subtilis, and Thermus aquaticus. So here the right answer is Desertibacter rhoseus. Next question, most common method of asexual reproduction in bacteria is? Options are budding, fragmentation, binary fission, and spore formation. So here the right option is binary fission. Binary fission से सबसे ज़्यादा like bacteria reproductions करते हैं, where we can say a mode of asexual. So very next question, typical bacterial growth curve with 4 stages is found in which culture? Options are batch culture, continuous culture, half batch culture, और all of the above. तो जनरली बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में जब आप चारों स्टेजेस को देख पा रहे हो, दैट इज व्हाट लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन फेज, then we have to understand that it is about the batch culture. So very next question, anti is equal to n0 to the power n is the characteristic feature of which phase in bacterial growth? Options are lag phase, log phase, stationary phase, and decline phase or death phase. So here the right option is log phase. Log phase पे ग्रोथ रेट पर्टिकुलर इक्वेशंस को फॉलो करते हैं, दैट इज व्हाट एंटी इज इक्वल टू n0 to the power n. The very next question, growth of microbe in 2 substrates where one is used preferentially first and then the next substrate is used produces a dash growth curve. So options are monoxic, dioxic, trioxic and polyoxic. तो अगर हम लोग 2 डिफरेंट मीडियाज को प्रोवाइड करते हैं फॉर ग्रोथ ऑफ ए पर्टिकुलर माइक्रोब, जहाँ पे फर्स्ट पर्टिकुलर मीडिया इज टेकन प्रेफरेंशियली, जबकि फर्स्ट ग्रोथ मीडिया खत्म होने के बाद सेकंड मीडिया की तरफ दे ट्रांसफर देयर न्यूट्रिशन मोड. तो इसकी वजह से एक्चुअली
ट्वाइस ग्रोथ इज फाउंड, और यू कैन से एक ग्रोथ कर्व हमें मिलेगा जहां पे हमें पर्टिकुलरली डायोक्सिक ग्रोथ कर्व मिलेगा. सो दैट इज द ऑप्शन number B is right one. So next question, hemocytometer can be used for microbial growth measurement of options are total count, viable count, dry weight and non-viable counts. तो hemocytometer से हम लोग bacterial count कर सकते हैं, and obviously by this bacterial count we can't distinguish living and non-living. The right answer is total count. The next question, which of the following is an example of neutrophile? So options are Sanidium, Caldarium, Sulfobos acidocaldarius, Ferroplasma acidiremus, and Staphylococcus aureus. So इनमें से कौन सा ऑप्शन न्यूट्रोफाइल को रिप्रेजेंट करता है? न्यूट्रोफाइल क्या होता है? अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो कि नियर टू बफर जोन में ग्रो करते हैं. Okay, so here the right answer is Staphylococcus aureus. इनके लिए preferable habitat is like 5.5 to 8 pH. तो इनको हम लोग न्यूट्रोफिल्स में कंसिडर कर सकते हैं. The very next question, the technique of Louis Pasteur for sterilizations of milk and wine is known as sterilization, pasteurization, autoclaving or centrifugation. So it is very easy question for us. Louis Pasteur actually pasteurization process को develop किए थे, and that is mainly useful for milk and wine industries. So the right answer is option B. The very next question, envelope surrounding virus particles is a characteristic feature of dash kind of virus. So options are animal virus, plant virus, bacteriophage, or all of the above. So here the right answer is एनिमल वायरस. जनरली एनिमल वायरस के सराउंडिंग्स में एनवेलप अवेलेबल होता है, एंड दैट्स हाउ वी कैन से एनवेलप होना एनिमल वायरस का एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है. वी कैन कंसीडर इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबिकल सिमेट्री इज आल्सो कॉल्ड एज डैश इन वायरस. सो हम लोग जनरली वायरस के बारे में जानते हैं, वायरस का डिफरेंट सिमेट्रीज होता है, जियोमेट्रिकल शेप्स होते हैं. तो यहाँ पे क्यूबिकल सिमेट्री का ही सिनोनिम हम कह सकते हैं. इनमें से कौन सा है? The helical, icosahedral, complex or spherical. So here the right answer is icosahedral, that is otherwise called as cubical symmetry. The very next question, Theodore Otto Diener first time discovered which of the following? So options are bacteriophage, prion, viroid or influenza virus. So here the right option is that viroid. So this Diener first time find out the particle called as viroid. That is a naked virus, we can say, or we can say a virus component, only nucleic acid or RNA is there, no other part like capsid is there. So that is what viroid, discovered by the person, you can say Otto Diener. The next question, the infectious form of prion known as PRPSC. Here this SC represents as scar, scientific, scarpy or scarpodermis. So here prions, we can say prions kind of infectious proteins. इनका दो टाइप्स हो सकता है, PRPC और PRPSC. यहाँ पे SC का मीनिंग क्या है? So the right answer is स्कर्पी. So स्कर्पी क्या है? एक प्रोटोटाइप है prion डिजीज जो कि सीप में मिलता है. So by the next question, bacteriophage M13 having dash genome, single stranded DNA, double stranded DNA, single stranded RNA or double stranded RNA. So here the right answer is single stranded DNA. The very next question, a typical T even phage having a head with dash number of sites, 18, 20, 24 or 13. तो जनरली एक T even phage में जो हेड होता है, that icosahedral head, it has a very fixed number of we can say sites. So it is generally 20. The very next question, prophage is associated with lytic cycle, lysogenic cycle, both or none of the above. So prophage generally क्या होता है? When bacteriophage mainly participate in lysogenic cycle, then the genomic material of this bacteriophage is actually integrated in the genome of the bacteria, and that is what called as prophage. So ये generally कौन सा phase में होता है? It is the right answer, lysogenic cycle. The next question, early protein is produced in, options are lytic cycle, lysogenic cycle, both or none. So
अर्ली प्रोटीन इज एसोसिएटेड विथ लाइटिक साइकिल. तो लाइटिक साइकिल का अर्ली पीरियड्स में एक्चुअली दिस प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड, दैट इज कॉल्ड अर्ली प्रोटीन. इट इज वेरी मच यूजफुल टू degenerate the genome of a bacterial host. So next question, dash number of capsomers are found in a TMB. तो इट इज अगेन वेरी फिक्स्ड. टीएमबी में जो कैप्सोमर होता है, दैट इज वी कैन से द बेसिक यूनिट ऑफ कैप्सीड, इट इज वेरी मच फिक्स्ड. तो ये नंबर बड़ा फिक्स्ड है. यहाँ पे ऑप्शन है 2130, 3120, 2230 और 1320. सो इट इज 2130. नंबर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. The very next question, each capsomer are having dash number of amino acids in TMB. Options are 168, 158, 148 और 138. तो एक सिंगल कैप्सोमर पे जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस होता है पॉलीपेप्टाइड्स, वो भी बड़ा फिक्स्ड होता है, एंड दैट फिक्स्ड नंबर इज ऑप्शन बी 158. द नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG, Basil calamate guerin. So it is a vaccine generally used for dash. The options are smallpox, cold, or anthrax or tuberculosis. Where the right answer is tuberculosis. The next question, glycocalyx is also called as. So here the options are sugar coat, protein coat, lipid coat, or none of the above. So here the right answer is sugar coat, also called as glycocalyx in bacteria. Next question, one flagella at two opposite sides, the bacteria is called as. Options are amphitrachus, amphilophotrachus, peritrichus, or monotrichus. So here the right answer is amphitrachus. It is the photograph also we are getting कि एक ही बैक्टीरिया दोनों साइड्स में दो फ्लैजेलास हो गए, वन ईच साइड. सो थैंक यू. इस वीडियो पे हम लोग ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस अगेन डिस्कस कर लिए, एंड नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो को प्रिपेयर करेंगे और आपके लिए ले आएंगे. सो थैंक यू. आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी मच यूजफुल टू यू. थैंक यू अगेन.